Hello everyone, Assalamu alaikum. So the thing that we are going to study today is multiple server, infinite queue length. Okay. Now what do we call this system as? MMC infinity system. Now I'll again say M is nothing but Poisson's arrival rate. I'll write it. Poisson's arrival rate, and this is lambda per hour. Okay. This M is for exponential service rate. It will just take hardly 5 minutes, don't worry. Then we can cover the problems. Exponential service rate, which is mu per hour. And then this C is equal to, C is greater than 1. Okay. And C is number of server. Number of server. We know this is multiple server, so C will be greater than 1, not equal to 1. Next, infinite queue length. If we are seeing infinite queue length, for infinite queue length, it will be equal to what? This will be infinite queue length. Infinite queue length. And this will be more equal to, this one will be equal to infinite population model, or you can directly write infinite population. I've already told you these terms. I'm just trying to explain so that it remembers or it revises in your mind. That's important. Okay. So we are studying MMC infinity model. Okay. Now we know that here in this question, the arrival rate and the service rate are lambda and mu. Now, if you look at the service rate in this type is mu per hour, but the number of server are C. Number of server are how much? C. So if the server are C, then effective service rate will be equal to something other than this. This is just for single server. So if you have multiple server, effective service rate will be equal to C mu. Remember this, okay? Therefore, if this value is equal to C mu, okay, then we can proceed and find the different terms that are required. Okay, I'll just use the different terms for you to understand. Just give me a second so that I can move downward. I don't know how this is not possible for me to move downward. It's not possible for me to move downward. Why? Okay. Okay. Now this is effective service rate we knew. So if we remember, just like the last term, सबसे पहली चीज जो हम देख लेंगे, एक मिनट यार, today the controls are not proper. Just give me a second. Okay, so suppose करो अगर we need to find P naught, so we know P naught is what? P naught is meaning of no people in the system, or we can also say server is free. Okay, server is free. So if I tell you to find P naught for this case, P naught will not be equal to 1 minus rho. अगर याद है लास्ट वाले में 1 minus rho रहता था, इसमें ऐसा नहीं है. P naught क्या रहेगा मैं बताता हूँ. P naught will be equal to, एक ही फॉर्मूला है याद रखना, समेशन n is equal to 0 से लेके n is equal to c minus 1. सपोज नंबर ऑफ सर्वर r is equal to 4. ठीक है, तो n 0 से लेके कहाँ तक जाएगा? n 3 तक जाएगा. Rho raised to n upon n factorial plus this total term is into summation plus rho raised to c upon c factorial. Okay, 1 upon 1 minus rho by c. Okay, this total term, whatever is this total term, okay, after taking this term, okay, one more thing that I would like to say, this will be only for summation. This term will be for summation. This will be only for ones. I hope you're getting. This will be taken as summation and this will be taken as 1, because if you see n is equal to c से लेके n is equal to c minus 1 जब है,
तो यहाँ पे रो के साथ क्या लिखा है n है, यहाँ पर क्या लिखा है n फैक्टोरियल, यहाँ पे डायरेक्टली c लिखा है तो इसका समेशन नहीं है। समेशन किसका है, ये टर्म का समेशन है, ये एक ही टाइम रहेगा। टोटल का जब आंसर आ जाएगा उसको इनवर्स ले लेना है। क्या ले लेना है, इनवर्स ले लेना है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा नया था इसलिए मैंने बता दिया, इससे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओके नाउ अगर बोला जाए आपको पी नॉट अगर बोल दिया तो ये है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए पी एन क्या था, नंबर ऑफ पीपल इन द सिस्टम। ओके दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पीपल इन द सिस्टम, और नंबर ऑफ पीपल नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पीपल इन द सिस्टम। ओके तो इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन पीपल इन द सिस्टम, ओके इसका फॉर्मूला क्या रहेगा वो भी बता देता है। पहले कैसा था, रो रेस टू एन, याद है रो रेस टू एन पी नॉट था। अब ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला एग्जाम में पूछता है, हाँ ये टाइप का क्वेश्चन 1 से 2 बार पूछा है पर पूछा है। ये क्या है मैं बता देता हूँ, समेशन रो रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल इनटू पी नॉट। नाउ दिस एन एंड दिस एन आर डिफरेंट। यहाँ पे जब एन था तो वो क्या था, सी को काउंटर कर रहा था, करेक्ट। यू कैन सी दिस एन वाज एक्चुअली फॉर सी and this n is for whatever is the number of people, whether we want to find 10 number of people in the system, 20 number of people in the system, so that n will be ranging from 0 to 10. Okay, automatically it will be 0 to 10 kind of a thing. Okay, is it okay for everyone? Are you all getting, are you all getting? So I'll write it p. Are you all getting? Just let me know. Yes. Okay, so I'll again write P naught. P naught is if the server is free or 0 people in the system, this means rho raised to n upon n factorial. N will be from 0 to n is equal to c minus 1 plus rho raised to c upon c factorial. If you see both the terms are same, just because there is one more term here, 1 upon 1 minus rho by c, I have to write it separately. Okay, then total will be inverse. Very simple. Okay, so you can remember both the terms, very similar terms. This will be ranging from 0 to c minus 1, and since this is having another term, that's why we need to mention it other ways. Okay, if you see, I'll tell you what is this term like. See, अगर number of server, see, sorry, number of server अगर 5 है तो C0 से लेके C4 तक कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, करेक्ट। और जो C5 की टर्म रहेगी वो तो इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि इसमें C कहां पे खत्म हो रहा है, n इज इक्वल टू C माइनस 1। तो C5 की जो टर्म है उसके साथ एक नई टर्म ऐड हो जाती है। ये प्रोबेबिलिटी से जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको एक और हिस्सा मिल जाता है इसमें, इसी वजह से आप इसको इसी समेशन में ऐड नहीं कर सकते। तो जो लास्ट C रहता है सर्वर, उसके साथ ये वाला टर्म ऐड होता है, और जो पहले वाले सर्वर रहते हैं उसके साथ सिर्फ ये नॉर्मल टर्म रहता है जो इसमें दिया है, और दोनों को ऐड करने के बाद क्या लेना रहता है, इनवर्स लेना रहता है। ओके, और दूसरा क्या बताया था, एक और टर्म हमने क्या देखा, पी एन क्या बताया, समेशन रो रेस टू एन अपॉन एन फैक्टोरियल इनटू पी नॉट, सिंपल। ओके ओके, आर यू ऑल देयर विथ मी? Yes. Okay, now we'll take another thing, LQ. Do you remember what was LQ? What was LQ? LQ. Length of queue. Very nice. Length of queue. Now ये एक फॉर्मूला, बस 2 फॉर्मूले ट्रिकी हैं, वो पहला वाला और ये इतना बड़ा ट्रिकी नहीं है जितना लास्ट टाइम था, सिंपल है, याद कर सकते हैं। याद करना इसलिए जरूरी क्योंकि एग्जाम में आता है इस पे क्वेश्चन। रो रेस टू c प्लस 1 अपॉन c फैक्टोरियल इंटू c, ओके, p नॉट इंटू 1 माइनस रो बाय c होल स्क्वायर, दिस इज इट। ये एक फॉर्मूला, इसमें एक नया फॉर्मूला और है, ये भी याद कर लोगे तो आसान हो जाएगा। रो अगेन यू नो c इज नंबर ऑफ सर्वर, ठीक है। रो यू नो व्हाट विल बी रो, दैट इज आल्सो नोन, ओके, यू नो व्हाट इज रो, दैट इज नॉट एन इशू। 1 minus rho by c whole square, okay, I've already told you rho last time, lambda by mu, nice, okay. So this is nothing but length of q. Now if I tell you find ls, I'll tell you ls is nothing but length of system. ls is length of the system. Now I'll tell you what is length of the system. ls will be more like lq plus rho, okay.
ls will be equal to lq plus rho. Now two more terms, wq, waiting time in the queue, waiting time in the queue, if you remember, lq by lambda. And similarly, waiting time in the system, can anyone tell me if wq is lq by lambda, what will be waiting time in the queue in the system? क्या रहेगा? ls by ls by ls by is anyone there? Is anyone there? Are you all there or sleeping in the lecture? Yes, sir. What will be this value? ls by lambda. LQ क्या था? WQ LQ by lambda, तो WS क्या रहेगा? LS by lambda. I am expecting you people to speak. Okay, thank you. No issue. If you just want me to complete, I'll complete it. Okay, I'll just take an example. Now, suppose lambda is 10 per hour, mu is 6 per hour. Okay, and suppose number of servers is equal to 2, it is given. Okay, and you are asked to find various values. Suppose you are asked to find first P naught. P naught is probability of server being free or no people in system. Probability of server being free or probability of no people in system. Probability of no people in system, not no people in the system. Okay. Now we know the formula of P naught. Can anyone tell me what is the formula of P naught? Please speak out. Please speak out. Can anyone tell me what will be the formula of P naught? Anyone? Summation of सर याद नहीं है. summation upon n equals to 0, Okay. N is equal to 0 and n equals to c minus 1, okay rho raised to 1, n. upon सर rho raised to n है ना, c नहीं. rho raised to n factorial, right? Yes, Rho raised to c upon c factorial, factorial, 1 upon 1 minus 1 by c, rho over c, total inverse, inverse. inverse. Do it. We know c is equal to what? 2. That's why it will be n is equal to 0. N is equal to 2 minus 1 will be equal to what? N is equal to 0. N is equal to c minus 1. That means n is equal to 2 minus 1. 0, 1 rho raised to n upon n factorial plus rho raised to c. What is the value of c? 2. So rho raised to 2 upon 2 factorial, 1 upon 1 minus rho by 2 total inverse. Right? Now, okay. Now what do we need to do? P naught. Now, first of all, we need to find the value of rho. Now we will find the value of rho again. Now listen, this is very important. Earlier rho was what? Lambda by mu. Correct? Now rho will not be equal to lambda by mu. If you remember, if you want to find rho, okay, so we need to find rho lambda by mu. What is lambda? 10. What is mu? 6. Now find this value. This will be equal to 10 by 6. If you want to simplify, you can simplify. If you remember earlier, rho was less than equal to 1. In these cases, in whatever cases that you are going to study for multiple server system, rho will be greater than 1. Just see this value. Okay, rho will always be greater than 1. Yes, rho by c will be less than 1. Why I am saying rho by c? Because there are multiple models. Okay, so we need to find rho only, and rho will have the same formula that was there earlier. But rho by c will be less than 1. Always check for
Rho by C should be less than 1. It should be less than 1. But if you look for rho by only for rho, it will always be greater than 1. Just remember this thing, okay? So in this case, in our case, rho is equal to lambda by mu, which is equal to 10 by 6. So we can write in place of rho as 10 by 6, and we know what is the value of 10 by 6. Can we simplify? 1.6. Can anyone tell me what will be this? What will be this? 1.67, correct? Right? So now since we know this value, we will try to simplify the terms, okay? Now we will open the summation. First summation will be 1.67, okay, raised to n hai, to raised to 0 upon 0 factorial, plus next term will be 1.67 raised to 1 upon 1 factorial. This is done because we need to open it from 0 to 1. Next will be 1.67 raised to square upon 2 factorial. 1 upon 1 minus rho is 1.67. Rho by, what was that value? Rho by C. What is the value of C? 2, correct? 2. Total of all this inverse. Now can someone find it for me? What will be 0 factorial? 0 factorial will be equal to 1. Raised to 0 is 1. So this term will be 1. This will be 1.67. This will be 1.67 square divided by 2. 1 upon 1 minus 1.67 by 2 will be 0.8. Can anyone tell me what will be that? 86. Am I right? 0.865, right? No, 0.885. Okay. Okay. Total value of whatever is coming, you need to take the inverse of this. Can anyone find it for me, please? Can anyone find it? Find P naught. Jaldi. Can anyone find it? 0.078. 0.07 sure. क्रॉस चेक कर लो फिर. एक बार चेक कर लो. इनवर्स लेना उसका. हाँ लिया सर. पक्का. एक काम करो, 3 डिजिट तक लो. 6667. 0.0675. डिजिट को ना बढ़ा दो. 0.0675. डिजिट बढ़ा दो. डिजिट 1.6. 0.0. थोड़ा सा डेसिमल इंक्रीज कर दो. डेसिमल एंड चेक करो. 1.667 करके देखो. 0.06758. नो नॉट एट ऑल प्लीज. मैं जो यहाँ से बहुत ज्यादा 0.1148. करो. पहले जहां से ज्यादा आवाज आ रही है पहले म्यूट करो. एक बार 1.667 पे चेक करके देखो. एवरीथिंग दिस विल ऑल्सो बी एट 1.667. ओके, ये वैल्यू पे चेक करो. So 0.1148. Are you sure? Are you? Yes, sir. No, not at all. 0.06782 आ रहा है वो ये वैल्यू से. अरे नहीं बाबा. हाँ सर 0.0678. ठीक है. 0.678. 78. This is 7. 6.78% times. Okay, the server will be free. Okay. Next thing, if I tell you to find n person, like 10 people in the system, probability of 10 people in the system, so this will be equal to P10, right? Summation of rho raised to n upon n factorial into P naught. So this will be equal to rho raised to 10 upon summation, but it is summation. I hope you are getting. So this will be more like rho raised to, it will start from where? N is equal to 0 से लेके n is equal to 10. So it will be more like rho raised to 0 upon 0 factorial plus what? Rho raised to 1 upon 1 factorial plus rho raised to 2 upon 2 factorial. It will go up to, can anyone tell me?
Are you all there? Yes, sir. Yes, sir. 10 factorial into Yes, जो sir. भी आंसर आएगा into P naught. So can you find this P10? Directly in the Kelsey you will be able to find summation. I am asking you to find probability of 10 people in the system. I hope everyone is getting. Can you find it directly in the calculator? What it is? Probability of 10 people? Can anyone find it? Probability of 10 people in the system? Possible? Is it possible? Yes, sir. Wait a minute. Okay. कैल्सी में डायरेक्ट हो जाता है ना समेशन. वैसे एक बार बताएं. कैल्सी में समेशन नहीं होता क्या डायरेक्ट? नहीं हो रहा है. रहने दो घर पे करना. अरे रहने दो यार, आगे बढ़ रहा हूँ मैं. ठीक है छोड़ो. कैन एनीवन टेल मी प्रोबेबिलिटी ऑफ नो क्यू? Is anyone there in the lecture today? Are you all sleeping? I'll just put it. There are two servers. Okay. So probability of no Q will be P naught plus P1 plus P2. Okay. Because either there will be no person, then there will be no Q. Either there will be one person only, then there will be no Q, or there will be two person in the system. So probability of no Q is if there is no one or there are only two people in the system. So we will add all the probability. We have already found the probability of P naught. Okay. We know the probability of P naught. We know what is P1. P1 will be equal to what? We have already found P10. Similarly, we can find P1. Rho raised to 1 upon 1 factorial into P naught plus rho raised to 2 upon 2 factorial into P naught. Automatically, we will get this answer as probability of no Q in the system. We are done with this. Next, what we can do is, if I ask you to find probability that person who enters gets a server. Probability that a person who enters get a server will be equal to like P naught. If there is no one in the system, he'll get a server. Even if there is one person in the system, he'll get a server. If there are two persons in the system, then the person who enters will not get a server. So we will only write P naught plus P naught. P naught plus P1, we know P naught, and P1 will be equal to what is that value again? Yeah, rho raised to 1 upon 1 factorial into P naught. That is it. If you find this value, this will give you the answer that probability that a person who enters will automatically get a server directly. Okay. So this is one thing. Net length of Q, if I ask you to find for this system, length of Q will be equal to, I have already told you, rho raised to C plus 1 upon C factorial into C, okay, into P naught
into 1 minus rho by C whole square. Now I have already told you what is rho, 1.667. C is nothing but 2, so this will be 3 upon 3 factorial into 3, okay, into P naught. We have already found whatever is the value of P naught upon 1 minus 1.667 upon 2 whole square. This will give you the value of length of the queue, and this will be a number. This will be numbers. Okay, this will not be a probability, it will be greater than 1, or it can be less than 1, so we have to consider it to be equal to 1, but it is not a probability. Now if I tell you to find LS, okay, LS is nothing but LQ plus rho. We have found LQ at the top, okay, and if we can add rho we already know 1.667, so automatically what we get is LS. This will also be in numbers. I'm just ending because I don't think people are interested. Now WQ is nothing but waiting time in the queue. Now waiting time in the queue, I've already told you, waiting time in the queue is equal to what? LQ by lambda. Okay, you have got the value of LQ from the top. You know the value of lambda, which is nothing but 10. So what you get from here is waiting time in the queue. This will be in, since this is per hour, you'll get it in hours. Okay, you can convert it into minutes also if required. Okay, now if I tell you to find WS is what? Waiting time in the system. Waiting time in the system will be equal to what? Waiting time in the system will be equal to LS by lambda. Again, we can find LS from the top, which is LQ plus rho. Lambda is again 10. If we find this value, this will again be in hours. If we want, we can convert it into minutes by multiplying it by 60. Is it okay for everyone? Understood? Just put it in the chat. I am going to give you 30 seconds before I move forward. Yes, sir. Thank you. Done. We'll take the next question. If you want it this way, I'll do it that way. Don't worry. Yeah. Question asked in the exam, December 14, 10 marks. The Taj service station has 5 machines, each of whom can service a scooter in 2 hours. Okay? Okay. Yeah. The Taj service station has 5 machines. Okay, each of which can service a scooter in 2 hours. Okay, on the average. Now, scooters arrive at the station at an average rate of 2 per hour. Okay, so lambda arrival rate is 2 per hour. Okay. Next, assuming that the scooters arrival are Poissonly distributed and the service time are distributed exponentially, find utilization factor. I've already told you utilization factor is server busy. Okay. So server busy is nothing but 1 minus P naught. So for that, we need to first find P naught. Okay. If we find P naught, we will be able to find the probability of the server being busy, which will be 1 minus P naught, which will be 1 minus server being free. Probability that the system is idle. System is idle, nothing but system, probability of system being idle is nothing but server is free. Okay. So you need to find P naught. System idle is nothing but server free. And server free is nothing but, if you remember, server free is nothing but server is not utilized, so P naught. So basically we need to find P naught and we need to find P. That's it. That's all it has been asked for us to find. Okay. Nothing apart from this. So I'll just try to simplify the things before we get on hand with this. Okay. Okay. Can you tell me which kind of system it is? Okay. Which kind of system it is? Can you identify for me? मतलब कौन सा टाइप है? 4 टाइप है ना हमारे पास, ये कौन से टाइप में फॉल करता है? फर्स्ट टाइप पक्का सी दिख रहा है, 5 मशीन्स एंड सर्विस कितने में दे रहा है? आर यू सर्वर कितने हैं बेटा? सर्वर कितने हैं? सर मल्टी सर्वर है, 5 सर्वर है। वेरी नाइस। और 5 सर्वर है, ये भी दे दिया, लैम्बडा भी दे दिया है, करेक्ट? लैम्बडा भी दे दिया है ना सर? यस। दिख रहा है कुछ? क्या बोल? अच्छा ठीक है यार, म्यूट करो, मैं बता देता हूँ, छोड़ो।
सर्विस कितने टाइम देखो, each of which serves a scooter. देखो, Taj service station has 5 machines rather than human. They are having machines. Okay. First thing. Okay. So first thing is they are having 5 machines to serve. Okay. And they serve it in 2 hours. Serve in 2 hours. So we already know service rate is per hour. Service rate is per hour, so you have to divide whatever is in hours. Each machine takes 2 hours. So what will be the service rate? 1 upon 2 hour. Okay. So this will be 0.5 per hour. Keep it simple. If you need to find the service rate, divide it by whatever is the service value in hours. So you'll get the service rate. Service rate is what? 0.5 per hour. Okay. What is the arrival rate? It is given in per hour. Automatically it is already given that arrival rate is 2 per hour. Arrival rate is 2 per hour. So if it was given per hour. 2 hours, then you have to divide it by 2 to get the per hour arrival rate. Okay, since it is already given 2 per hour, we will use this 2 value. Now C is equal to 5. Okay, there is no mention of queue length. Queue length mentioned ही नहीं है, तो infinite queue length mention किया जाएगा. When something is not mentioned, it means that the queue length is infinite. ठीक है, population is always infinite. That is for sure. So if there is no mention of queue length, it will be infinite. There will no mention of population anyways, so it will be infinite population. So if you try to see this system, this will be Poisson's arrival rate, exponential service rate, number of server 5, infinite queue length, infinity, and infinite population model. So this is nothing but more like which model? This is our third kind of model. If we try to write it, this is what is the topic name of ours? Okay, multiple server, infinite population. Infinite queue length. This is multiple server infinite queue length model. Okay, now we are asked to find P naught. I have already told you what is P naught. Do you remember? Yes, sir. P is equal to, sorry, summation n is from 0 to n is equal to C minus 1. What is C here? 5. So this will range to 4, right? Rho raised to C upon, sorry, rho raised to n upon factorial plus rho raised to C. What is C? 5 upon 5 factorial. 1 upon 1 minus rho by C. Total ka inverse. Can we find this value? Can we find this value? Yes, sir. Yes, please find it if you can find. And if you don't want to find, I'll give you the value. Don't worry. This will be rho raised to 0 upon 0 factorial plus rho raised to 1 upon 1 factorial plus rho raised to 2 upon 2 factorial plus rho raised to 3 upon 3 factorial plus rho raised to 4 upon 4 factorial. Okay, plus rho raised to 5 upon 5 factorial into 1 minus upon 1 minus what is rho? We need to find rho. What is rho? Rho is what? Lambda by mu. What is lambda? 2. What is mu? 0.5. So rho will be equal to what? 4. Correct? Rho will be equal to 4. So this is 4 divided by C, 5. Okay? Total. Whatever is the total of these values, inverse of this. Okay? So if we try to find P naught will be equal to 1 plus 4 square by 2, 16 by 2 is 8 plus 4 cube 64 by 3, 4 is to 4, 64, 256 by 4 will be nothing but 64. Okay, no, sorry, 3 into 2, sorry, 3 factorial it is. So 64 by 6 plus 256 by 4 into 3 into 2. Okay, 24. This all value plus rho raised to 5 will be equal to what? 4 raised to 5. So 4 raised to 5 upon 5 factorial into 1 upon 1 minus what is 4 by 5.8. Total inverse. Whatever is this total, we need to inverse. Is it okay now? Is it okay now?
Yes, sir. Try to find this value. I'll just put it for you. This value is coming out to be 76.99 inverse for me. So this will be equal to 0.01298, which is nothing but 1.29%. The server is free. This was asked. This was asked. If you remember what was asked, can you see? Just I've written it. Probability that the server shall be idle, system shall be idle. So 1.29% time the system will be idle. Okay. Now, if the system is idle, what is the utilization time? Probability of utilization factor. So probably utilization factor will always be given by probability when the server is busy. So this will be 1 minus P naught. So this will be equal to 1 minus 1.298. Sorry, probability है ना 0.12, sorry 0.1298. So if you minus this will be equal to 0.9870. That means 98.7% times the server will be busy. So utilization factor is, can anyone tell me what will be the utilization factor? 98.7%. The server will be utilized. Okay. Okay. Yes, sir. Next type. Okay. There are various questions that I have framed from the exams. If you want, we can try it. Can you read this question? May 16 it was asked. Are you all there with me? Yes, sir. Yes, sir. Customer service at a railway reservation booking window, customer service randomly at the average rate of 16 per hour. So service rate is 16 per hour. Whatever is 16 per hour, don't change it. Okay. So lambda is 16 per hour approximated to Poisson distribution. If the service is exponentially distributed with a mean of 20 per hour, mean does not vary. Mean is average service time. Just see if it is per hour. Yeah, it is per hour. So we can directly use 20 per hour. Okay. Determine the percentage utilization of capacity. Now listen. If the number of server is not mentioned, it is assumed to be equal to 1. Okay. So if it is assumed to be equal to 1, if the population is not mentioned, it is assumed to be equal to infinite. Sorry. If the queue length is not mentioned, it is assumed to be equal to infinite. So this is M1 infinity model. Okay. This is it. I hope everyone is getting what I'm saying. Are you? Yes, sir. So M1 infinity model. This is our first type, if you remember. Okay. Now, what are we asked to find? Percentage utilization of capacity. What do we mean by percentage utilization? Server is busy, correct? Which will be equal to what? 1 minus P naught. P0. P naught. P server is free. Okay. Now, for this type, P naught was equal to what? P naught was actually equal to 1 minus rho, right? So, probability of server being busy is so simple. Just look at this. 1 will be there. P naught is equal to what? 1 minus rho. Okay, so automatically 1 minus 1 will get cancelled. Minus will be plus. So, always remember for this system, utilization factor is directly what? P of server being busy is directly equal to what? Rho. Simple. And for that, we need to find what? Rho. Rho is what? Lambda by mu. What is lambda given in the question? 16. What is mu? 20. So this is 20. 16 by 20. So this will be 4 by 5, 0.8. 0.8. Probability of server being busy is 0.8. You could have done either way, you would have got the same value. देखो next क्या पूछा है? Next क्या पूछा है? Probability that there are at least 3 customers in the queue. How many customers? 3 customers in the queue. So LQ is 3, sir. At least 3 customers. Probability of at least 3 customers is P
P n is greater than equal to 3. Am I right? So this will be P3 plus P4 plus P5 plus P infinity. So this will be 1 minus P0 plus P1 plus P2. Yes? Am I right? Yes. Yes. Yes, sir. Now, the formula of Pn, for this case, it was rho raised to n into P naught. Simple formula. Okay. So if we want to find probability of n is greater than equal to 3, then it will be equal to 1 minus P naught will be equal to P naught. Okay. P1 will be equal to rho raised to 1 into P naught. P2 will be equal to rho raised to 2 into P naught. So if we can find this value, it will be so simple. 1 minus P naught, we already know this is rho. We can find P naught if we required, because we require P naught now. So we need to find P naught, right? Find नहीं किया था P naught, पर अभी find कर लेते. P naught is what? 1 minus rho. 1 minus rho is 1 minus 0.8, which is equal to what? 0.2. So probability of n is greater than equal to 3 will be equal to 1 minus 0.2 plus rho is what? 0.8 into 0.2 plus 0.8 square into 0.2. Okay. Okay. Is it okay? Find this value. Yes, sir. Find Yes. this again. This is all bracket, हाँ ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा. प्रॉब्लम हो जाएगा, ये ब्रैकेट है ना तो सब माइनस करना पड़ेगा. 0.512, sir. Very nice. Final answer is 0.512. Probability of at least 3% in the system. और देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है. Average time spent in the system. This will be WS or WQ? Average time spent in the system. WQ. WS. S, ये सिस्टम बोला है. सिस्टम सिस्टम बोला है ना. हाँ. तो WS का फॉर्मूला क्या है? LS बाय Lambda. वेरी नाइस लैम्बडा. तो वी नीड टू फाइंड LS. व्हाट इज LS? रो अपॉन 1 माइनस रो. 1 minus rho. वेरी नाइस. तो 0.8 अपॉन 0.2. दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? 4. तो वी हैव गॉट LS. LS इज व्हाट? LS is 4. Lambda is 0.8. Can you find it? 5. Am I right? Sir, lambda 20 दिया ना sir? Lambda 20 का है. हाँ हाँ हाँ. Lambda कितना दिया है? 0.2 है आंसर Lambda सर. 20 है. 0.2 है sir. 0.2 है. WS. 0.2 है. WS 0.2. 0.2 hours. Correct ना? तो 0.2 हाँ. into Yes. 12 minutes. 12. Very nice. Okay. Now और क्या पूछा है देखो क्वेश्चन में. क्या पूछा है? Average number of customers in the line. This is average number of customers in the line. Q. W LQ या WQ? Q. Q. Average number of customers in the line. LQ. LQ तो sir. आएगा L. LQ क्या रहेगा? LQ होगा सर. याद है LQ? LS minus lambda. LS माइनस रो. अच्छा रो है. या तो LS तो फाइंड कर चुके हैं. LS अभी फाइंड किए थे. 0.2 आ रहा है. 4 था तो 4 माइनस 3.2. 3.2. this is number of customers. We can assume it to be 2 LQ, but keep it same when you are solving the problem. Last thing, if you can see, probability that there are 5 customers in the system, exact 5. That means P5 find करने बोल रहा है. P5 का फॉर्मूला क्या है? Rho raised to 5 into P naught. Simple. So we know 0.8 raised to 5 into P naught is, P naught क्या था? 0.2. So can you find 0.2. 5 people in the system? 0.065. 0.065536. अंडरस्टूड. एग्जाम में क्या पूछता है? जो लास्ट वाला क्वेश्चन था उसमें से 2 ही चीज पूछा था 10 मार्क्स को.
अब ये देखो, आई थिंक सेम क्वेश्चन फिर पूछा है क्या? हाँ देखो ना, सेम है. देखो, एट अ बुकिंग विंडो कस्टमर्स अराइव एट द रेट ऑफ 10 पर मिनट. ओके, सर्विस कितना है? 15 पर मिनट. ओके, पर मिनट दिया है सब कुछ. आंसर किसमें दिया है? क्वेश्चन लैम्बडा और म्यू किसमें दिया है? पर मिनट. पर मिनट. तो आपका आंसर किसमें रहेगा? जो भी एलएस डब्ल्यू क्यू फाइंड करोगे मिनट में आएगा. नाउ प्रोबेबिलिटी दैट द बुकिंग क्लर्क वेट्स फॉर द कस्टमर, व्हाट डज दिस मीन? सबसे पहली चीज क्या है? कुछ भी और डेटा नहीं दिया है. सी के बारे में नो डेटा, और ये क्यू के बारे में भी नो डेटा. तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा? MM1 इंफिनिटी. इंफिनिटी. वेरी नाइस. अब देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द बुकिंग क्लर्क वेट्स फॉर द कस्टमर मींस सर्वर इज फ्री, राइट? Not, sir. P naught. Very nice. Okay. Probability that there are at least 3 customers in the system. Now you know how to solve this. Do you know? Yes. Very nice. Okay. What will be this? Probability of at least 3 customer will be 1 minus P naught plus P1 plus P2. Now, average number of customers in the queue. Number of customers in the queue. That means LQ. Okay. Right? Yes. Now, average time spent in the queue. In the queue, WS and WQ. We need to find WQ. Okay. And this question we will solve it afterwards. Probability that the customer is served within 4 minutes. We will see it later. Don't worry. Is it okay now? Okay. Yes, sir. Now, look at this question. Can you try it yourself? Yes, sir. Just try it fast. I'll also solve it for you, but I want you to solve it. Customers arrive at the first class ticket counter of a theater at the rate of 12 per hour. So lambda is 12 per hour. There is one clerk. यहाँ पे 1 बोला है, नहीं बोला होता तो assume कर लेते. तो C is equal to 1. And the customer is served at the rate of 30 per hour. That is mu is equal to 30 per hour. What is the probability that there is no customer in the system? P naught. P naught is 1 minus rho. So we need to first find rho. Rho is lambda by mu. 12 by 30, 2 by 5. 2 by 5 will be equal to 0.4, I think. 0.4. 2 by 5 is 0.4. हाँ. Okay. हाँ, sir. So we know probability that there are no customer, 1 minus 0.6. Very nice, 0.6. Okay. Am I right? Yeah, 0.6. Probability that there are more than 3 customers. What does it mean? More than 2 customers. True आएगा कि नहीं आएगा? हाँ. आएगा या नहीं? नहीं आएगा, sir. नहीं आएगा. तो प्लीज ध्यान देना. P2 प्लस P3 प्लस P4 अप टू P infinity. तो जब आप इसके लिए फाइंड करोगे तो दिस इज नॉट एटलीस्ट. तो 1 माइनस ओनली P नॉट प्लस P1 बेटा. Not to include P2 because more than 2 customers की probability पूछ रहा है. Is it okay? Is it okay? कौन है यार? म्यूट करो अपने आप को, इतनी आवाज आ रही तो. हो रहा है क्या? सॉल्व कर सकते हो ये? देखो क्या आ रहा है. Wait. What is रो? रो की वैल्यू क्या है इसमें? 0.4. 0.4. फाइंड करो, देखो कितना आ रहा है ये. 0.16. 0.16. वेरी नाइस. 0.16. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला सिर्फ ध्यान देना. There is probability there is no customer waiting to be served. Can you tell me what does it mean? Probability, I'll write it. No customer waiting to be served. I'll tell you. Can I tell you? Service. No.
Probability that there is no customer waiting to be served means probability that there is no queue. Simple. फैक्टर रहेगा. Am I right? Probability that there is no customer waiting to be served means what? Probability that there is no queue. Since this is a single server, probability of no queue is either there is 0% or there is 1%. We can't get two. So probability of no queue is nothing but probability of no customer waiting to be served. Okay? मतलब जो भी आ रहा है उसको सर्विस मिल रहा है, उसकी probability क्या है? या तो कोई ना रहे या तो एक ही रहे. करेक्ट? तो P नॉट तो मिल चुका है 0.6, P1 भी मिल चुका है रो रेस टू 1 into P नॉट, तो 0.6 प्लस दिस विल बी 0.2, राइट? व्हाट वाज दिस वैल्यू? रो कितना है? 0.4. Probability 0.84 sir. very nice. Probability of no queue. That means probability of no customer waiting to be served. Okay. Okay. Last question. Dekh. A customer is served and is being served and nobody is waiting. A customer is being served and nobody is waiting. Probability customer is being served and nobody is waiting. Can you tell me what will be this? P1. Very nice. P1. सिंपल सी बात है ना. प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर इज बीइंग सर्व, मतलब कस्टमर है, क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी? कस्टमर बीइंग सर्व P1 एंड नो वन इज वेटिंग, और P नॉट का चांस ही नहीं है क्योंकि कस्टमर सर्व हो रहा है. तो ये बोलना था उसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग वन कस्टमर इन द सिस्टम को उसने घुमा के क्या बोला? प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर इज बीइंग सर्व्ड एंड नोबडी इज वेटिंग. दैट मींस P1, and P1 is what? Rho raised to 1 into P naught. We know what is rho, 0.4. What is P naught? 0.6. So probability of customer is being 0.24. 24. simple. Simple. Is it simple? Yes. Now, Yes, sir. get this question. December 10th. Very simple. We are trying to finish it as early as possible. Train arrives at the yard every 15 minutes and the service time is 33 minutes. एक स्टेशन में या कार शेड में ट्रेन आ रही है एवरी 15 मिनट्स पे और सर्विस टाइम कितना है? 33 मिनट्स. इंपॉर्टेंट क्या है? अराइवल किसमें दिया है? अराइवल दिया है, रेट नहीं दिया है. अराइवल कितना दिया है? 15 मिनट्स. तो अगर मैं अराइवल रेट बोलूंगा, क्या बोलूंगा? अराइवल रेट दैट विल बी इक्वल टू 1/15. ऑटोमेटिकली पर मिनट हो जाएगा. समझ रहा है क्या कह रहा हूं? समझ रहा है? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ. अब सर्विस टाइम देखो कितना दिया है. सर्विस टाइम बोल रहा हूँ, रेट नहीं. सर्विस टाइम कितना दिया है? 33 मिनट्स. तो सर्विस रेट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 33. 1/33 minutes. Okay. Now this is mu and this is lambda. Now, is there anything apart from this given? Yes. If the line capacity of the yard is limited to 4 train, very important. Line capacity कितना है? यार्ड का लिमिट कितना है? लिमिट कितना है? 4. मतलब नंबर ऑफ सर्वर कितने हो सकते हैं? 4. 4 से ज्यादा ट्रेन नहीं आ सकती. ठीक है, 4 से ज्यादा ट्रेन नहीं आ सकती. सॉरी, ये सर्वर नहीं है. 4 से ज्यादा ट्रेन नहीं आ सकती मतलब क्यू है. सपोज करो एक बड़ा Q. और इसमें 4 ट्रेन खड़ी हो सकती है. 1 ट्रेन, 2 ट्रेन, 3 ट्रेन, 4 ट्रेन. समझ रहा है? तो n की वैल्यू दिया है. तो ये कौन सा टाइप है? देखो, पॉइजन अराइवल, एक्सपोनेंशियल सर्विस, नंबर ऑफ सर्वर 1. ओके, बट फाइनाइट क्यू लेंथ और इनफाइनाइट क्यू लेंथ. लाइन कैपेसिटी कितना दिया है? N. Finite. 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 Infinity model. Very nice. Very nice. I hope you got what I am trying to explain. Okay. Is it okay? Yes, sir. What is asked? कौन है यार ये जो इतना वॉइस कर रहा है? वो प्लीज म्यूट करो. Probability that the yard is empty. That means what? P naught. Right? And average number of trains in the system का मतलब क्या है? In the system average number of trains means LS.
Give me a second. My system, 1 second. Probability that the yard is empty is P naught, and the average number of trains in the system, it will be equal to what? LS. Yes or no? Yes or no? इससे समझा नहीं. बेटा probability that the yard is empty, यार्ड खाली है मतलब सर्वर फ्री है, अब इजी ये फ्री है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी नॉट बोल रहा है ना यार्ड इज एम्प्टी. यस और नो? यस. नाउ कभी भी नंबर की बात करते तो मैंने क्या बताया था, दो टर्म रहता है, एलएस और LQ. अब किसका एलएस पूछ रहा है? सिस्टम का ना, क्योंकि एलक्यू तो दिया हुआ है 4 है. अरे एलक्यू तो दिया है ना, इसमें एलक्यू का फॉर्मूला ही नहीं होता. तो क्या बचा? सिस्टम बोला है तो क्या रहेगा, एलएस या एलक्यू? एलएस. वेरी नाइस. तो एलएस रहेगा, तो एलएस फाइंड करना है अपने को. देखो कुछ दिख क्यों नहीं रहा, ये साइड मूवमेंट नहीं हो रहा है ये सब. गिव मी अ सेकंड, मैं बंद करके चालू करता हूँ. 1 सेकेंड. ओके. हाँ, तो अब बोला क्या है, सबसे पहले क्या बताया, पूछा क्या बोला क्या उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ यार्ड इज एम्प्टी. 1 सेकेंड, आई हैव नॉट शेयर्ड द स्क्रीन. देखो पहले क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी दैट द यार्ड इज एम्प्टी. एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो वी नीड टू फाइंड पी नॉट. इसके लिए फॉर्मूला बताया था, कौन सा सिस्टम है, एम 1 n इंफिनिटी मॉडल. इसका फॉर्मूला पी नॉट का क्या था, 1 माइनस रो अपॉन on 1 minus rho raised to n plus 1. Very nice. So we need to find rho. Rho will be equal to what? Lambda by mu. Now listen. Lambda is what? 1 by 15. Mu is what? 1 by 33. Right? So this will be 33 by 15. Find rho. देखो rho कितना मिल रहा है? 2.2. Very nice. तो rho मिल गया 2.2. तो this will be 1 minus 2.2. Don't worry. Answer negative नहीं आएगा. Okay? 1 minus this will again be 2.2 raised to n. कितना है n of the system? 4 4. plus 1. So 1 minus 2.2, whatever is the answer, minus 1.2 divided by 1 minus, what is this, 2.2 raised to 5. Please find it. देखो कितना आ रहा है, देखो कर सकते हो. माइनस में आ रहा है. नहीं आएगा माइनस, कैसे माइनस आएगा, नीचे भी माइनस है ना, कैसे आएगा माइनस. 1 माइनस 2 0.02. प्लस आएगा वो 0.0237. इज इट राइट? हाँ सर 0.03. ऐसे आएगा वो, डरो मत. फिर दूसरा क्या बोला है, एवरेज नंबर ऑफ ट्रेन्स इन द सिस्टम. व्हाट डज इट मीन, एलएस और एलक्यू? Yes. LS. LS. So we know what is LS in this system. एक गंदा सा फॉर्मूला था, देखो. Yes. Rho by 1 minus rho. माइनस रो. फिर क्या था, आई थिंक 1 प्लस, Back 1 plus n rho raised to n plus 1. नहीं मैंने कुछ गलती कर दिया. 1 प्लस Rho है. रो रेज टू n प्लस 1 माइनस n Minus रो रेज टू n. rho raised to n divided by. 1 माइनस रो पहले से है, 1 माइनस रो रेज टू n प्लस 1. इज इट राइट? Yes. So we need to find it. We know what is rho. 2.2 upon 1 minus 2.2. Don't worry, answer will be positive. 1 plus 4. 2.2 raised to 5 minus, sorry, 5, yeah. Minus 5 into 2.2 raised to 5. Okay? Upon 1 minus 2.2 raised to 5. Please find it. Please find it. Can anyone find it for me?
Can anyone? Are you all trying? Just let me know whether you are trying or not. This time. आ रहा है आंसर, बता सकते हो? आ रहा है? What is it coming like? LS? I'll write it 3.26 है. Anyone? Anyone? यही आ 2.2 रेस टू 4 आएगा, फाइल लिखे आप कहाँ? यहाँ. बाजू में. हाँ. Okay. Okay. Now everything is fine now, I think. Do it fast. Last question after this. वो last type बता के complete करता हूँ. Is it okay? Check it. 3.2. Yes, yes. Is it okay? Solve it, please. Are you all getting 3.26? यस सर. आ रहा है same? हाँ आ रहा सर. Anyone else? Anyone else who is getting the same? Anyone else? हाँ. एक और तरीका है. Hello. Are you all there? Are you all there with me? हेलो. Are you all there with me? सर. Listen now. LS को फाइंड करने का एक और तरीका है. सुनो अच्छे से. अगर Q जो N दिया है ना, N की वैल्यू अगर 100 है तो बहुत प्रॉब्लम होगा ये वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए. बट N अगर 4 है, 5 है, अपने में N क्या था ये क्वेश्चन में? 4. 4. फोर था. इसका बिना फॉर्मूला याद किए एक और तरीका है. NPN का समेशन ले लो और ये जो स्मॉल n है ये 0 से लेके कैपिटल N तक जाता है. बस इतना याद रखें. सिंपल. देखो इसका मतलब क्या है. 0 इंटू P0, करेक्ट. फिर n की जगह क्या आ जाएगा? 1. तो 1 इंटू P1. फिर क्या आएगा? 2 इंटू P2, करेक्ट. 3 इंटू P3, करेक्ट. 4 इंटू P4. आई होप एवरीवन इज गेटिंग. अगर n कम है, अगर 100 तक है तो लिखते लिखते थक जाओगे, तब मत करो. तो ये चला जाएगा क्योंकि 0 तो एलिमिनेट हो जाएगा. तो बचा क्या? P1 प्लस 2P2, करेक्ट. करेक्ट. आर यू ऑल देयर? बात कर रहा करेक्ट सर. 4P4. Yeah, now you know what is P1. Rho raised to 1 into P naught. What is this? 2 times rho raised to 2 into P naught. This is what? 3 times rho raised to 3 into P naught. This is 4 into rho raised to 4 into P naught. तो P naught कॉमन है. P naught की वैल्यू अपने को पता है. P naught कितना था इसमें? 0.0237. तो बाहर निकाल दिया. अंदर क्या बचा? रो. रो की वैल्यू कितनी मिली थी? 2.2. तो 2.2 प्लस 2 इंटू 2.2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2.2 क्यूब प्लस 4 इंटू 2.2 रेज टू 4. चेक करके देखो आंसर सेम आ रहा है क्या? कर रहे हो कि नहीं? पहले ये बता दो. चेक कर रहे हो?
अरे सर कर रहे हैं। करो तो। ये फॉर्मूला तभी यूज करना जब जो अपना कैपिटल एन है वो कम है, बहुत बड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, फिर वो प्रोबेबिलिटी वाला अच्छा है। वो पी, वो जो रो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो इसी से बनता है, एन पी एन से ही बनता है। सर 3.259 है सर। बराबर ना, 3.26 दिया ना मतलब। ओके ओके। ओके Last question before we take the next type. Just look at this question, very simple. Please listen. In a railway marshalling yard, भूल जाओ रेलवे मार्शलिंग क्या होता है, यार्ड समझ में आ गया. Good trains arrive at the rate of 30 trains per day. So arrival is per day 30 per day. Please listen what I am saying. Very important. Okay. Assuming that the interval follows an exponential distribution and the service time means the time taken to hump a train, मतलब repair a train. Service time distribution is also exponential with an average of 36 minutes. Now this is important. One is per day and one is in minute. So I will tell you what you need to do. Mu को, ये mu नहीं है, sorry, ये mu नहीं है. This is service time. First is arrival rate, that's for sure. क्योंकि per day अगर दिया है arrival के बारे में तो वो क्या है, arrival rate है. Okay, तो first thing is very sure, that is Poisson's arrival rate. Second, service time दिया है, service rate नहीं दिया है. क्या दिया है service time, कोई बता सकता है? सर्विस टाइम कितना दिया ट्रेन को? 36 मिनट्स. 36 मिनट्स. तो अगर मैं सर्विस रेट फाइंड करना चाहूँ म्यू, तो 1/36 मिनट्स हो जाएगा. 1/36. वेरी नाइस. तो मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया, करेक्ट. तो लैम्बडा को अब किसमें ऊपर कन्वर्ट वाले करना पड़ेगा मुझे? मिनट में. मिनट में ही करना 30 पड़ेगा. पर डे, यस नो, यस और नो. तो 30 हाँ. पर डे कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं या नहीं? और अगर मैं इसको मिनट में करूं तो क्या हो जाएगा? 24. 1 आवर में कितना मिनट होता है? 60. 60 मिनट्स. तो हो गया कि नहीं लैम्बडा? लैम्बडा किस में कन्वर्ट कर दिया? 30/24 इंटू 60. यस और नो? देखो कितना आ रहा है. हाँ सर. 0.02. पक्का? चेक कर लो. और कुछ नहीं आ गया? 0.02083. 20 हाँ वही 08. चलेगा ये. तो अब देखो दोनों चीज मिल गई हमको. म्यू मिल गया 1/36 पर मिनट और लैम्बडा मिल गया 0.02 पर मिनट. ओके. तो अब रो फाइंड कर सकते हो. रो क्या है? लैम्बडा बाय म्यू. कर सकते हो या नहीं? बताओ कितना आ रहा है रो बताओ ना कितना आ रहा है. लैम्बडा बाय म्यू बोल रहा हूं मैं. 0.72. इसको एक काम करो, 208 तक लो. अब देखो डेसिमल ज्यादा लो, 0.0208. अब देखो 0.74. वेरी नाइस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. थोड़ा चलेगा आंसर उतने से भी, पर हमेशा 3-4 डेसिमल तक लिया करो इसमें. नहीं तो फ्रैक्शन में 7488. 7488 मतलब 75 हो गया एक तरीके से. करेक्ट ना? हाँ ठीक है सर. तो 75 ज्यादा करेक्ट आंसर है. ओके. रो मिल गया हमको कितना ये. अब देखो क्या पूछा है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड क्यू साइज. क्या पूछा है? क्यू साइज. क्यू साइज का मतलब क्या है? सबसे पहले साइज पूछा है तो नंबर पूछा है या नहीं? हाँ सर. लेंथ. नंबर कौन सा? लेंथ किसका है? सिस्टम का या क्यू का? क्यू का है. क्यू. देखो ब्रैकेट में लिखा है लाइन लेंथ, तो एल क्यू पूछा है या नहीं? अब एल क्यू पता है तुमको. सबसे पहले सिस्टम कौन सा टाइप का है वो पता करना पड़ेगा. एम कुछ डेटा दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है 1. हुआ या नहीं? तो एल क्यू का फॉर्मूला तो पता है आपको. एल क्यू क्या रहेगा इसके लिए? एल एस माइनस रो. तो एल एस फाइंड करना पड़ेगा या नहीं? एल एस याद है क्या था? रो बाय 1 माइनस रो. वेरी नाइस. रो बाय 1 माइनस रो, दैट मीन्स 0.75 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.75. देखो कितना है? 3 आ रहा है.
2.25 आ रहा है मेरा तो, नहीं ना। एलएस कितना आ रहा है? एलएस हाँ 3 आ रहा है, सॉरी कितना आ रहा है? 0.75 1 माइनस 3 आ रहा है। वेरी नाइस। तो एल क्यू फाइंड कर सकते हो। एल क्यू क्या रहेगा? 3 माइनस 0.75 कितना हो गया एल क्यू? 2.25। 2.25 वेरी नाइस। अब देखो दूसरी चीज देखो, प्रोबेबिलिटी दैट द क्यू एक्सीड 10। क्या बोल रहा है? क्यू साइज एक्सीड्स 10। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सीड 10। इसके लिए याद रखना जो भी नंबर रहेगा उसको रो रेस टू 10 कर दो, खत्म। ठीक है, रो कितना था? 0.75। फॉर्मूला डायरेक्ट है, बन जाता है अगर बनाना चाहो तो 0.75 रेस टू 10 देखो क्या है, क्यू साइज बोल रहा है। हाँ क्यू 1056 की प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सीड्स 10 कितना हो रहा है? 0.056 0.63। 31351 लास्ट लिसन, लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। इफ द इनपुट ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेस टू 33 पर डे, इनपुट अगर इंक्रीज हो रहा है 33 पर डे, मतलब क्या इंक्रीज हो रहा है? लैम्बडा ना, लैम्बडा कितना हो रहा है? 33 तो व्हाट विल बी द चेंज इन 1 एंड 2? फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व करो। कर 33 सकते हो? लेंगे। कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ बस हो गया, बस ये काफी था, इतना सारा तुमने पढ़ लिया और क्या पढ़ाऊं मैं तुम। हेलो, यस एक टाइप बचा है फोर्थ। सुनो, ये जो फोर्थ टाइम है ना, ये एग्जाम में पूछता ही नहीं है। बहुत ज्यादा टिपिकल फॉर्मूले इसके, तो एग्जाम में नहीं पूछता है। तो मैं इसके फॉर्मूले तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा। एग्जाम में पूछा ही नहीं है, बहुत इजी है, फॉर्मूला यूज करना है। ओके ओके इज इट सर ओके? ये बार पूछ लिया तो? नहीं पूछेगा, इस बार तो क्विज है।